welcome back to my channel, and this is Falguni here. So this is a brand new video in which I'm going to show you some DIY makeup products which actually you can make at home. But yeah, number one tip, while making these products you are going to use all the products which are branded, because yeah, it is already going to be a homemade thing. And अगर आप cheap वाले product थोड़े कम इसके वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू टर्न आउट वो इतना अच्छा नहीं बनेगा. सो जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे बहुत अच्छे वाले यूज़ करना. एंड येस, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कुछ नहीं. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So number one, we are going to make makeup remover. For that I'm going to take half bowl of water and I'm going to take 1 tablespoon. For me 1 tablespoon it will be this size. 1 tablespoon of any coconut oil. I'm going to use this Parachute coconut oil. So 1 tablespoon of that. You have to just mix it properly. After this you are going to take any mild soap, anything can do. I am going to use this Good Vibes ka face wash T3 which I have, and I am going to just mix it up. And yes, your makeup remover is ready. This remover has removed my matte lipstick, so you can understand it is good. So the second thing is primer. For that I am going to take 2 tablespoons of oil. And I'm going to mix a tablespoon of aloe vera gel in it. I have to just mix it properly. I'm going to use Nature's aloe vera gel. After that, add few drops of any essential oil you have. Only few drops of it. I am using Good Vibes essential oil. This is very nice. Yes, that's it. You have to just mix, and if you have any containers or something, you can just store it. If you have oily skin, then yes, just reduce the amount of oil. You just put 1 tablespoon. I have dry skin, so I have added 2 tablespoons, and altogether it is giving a good coverage and was nice when I applied on my skin. So the third DIY is the BB cream. For that I am going to take a tablespoon of moisturizer. Any moisturizer can do. I am using this. And you are going to add compact powder. So basically I will be using Oriflame's compact powder. Any compact powder can do. You just have to mix the whole thing with the moisturizer. Just mix it well, and yes, your BB cream is ready. So next DIY is lip balm. So I'm going to take Vaseline and same amount of dark chocolate in it. Just make it sure you are going to heat both the things in the double boiler method. While doing this, take care कि कांच की चीज़ अगर आप ले रहे हो तो वो ज़्यादा फटाक से गर्म हो जाती हो, तो उसका सिर्फ ध्यान रख लेना. एंड येस, within 2 minutes वो बन जाता है. And then you have to keep it in a freezer for 20 minutes. You just don't expect you will be getting a brown tint on your lips, but yeah, overall it was a very nice DIY. सो काजल बनाने के लिए आपको 2 ग्लासेस लेने हैं और ये 2 घी के दिए हैं. All these things I am going to place it vertically, and then I am going to place a plate over it. Make it sure you do this for 10 minutes. You will be getting this sort of charcoal. If you have activated charcoal, then use it. Then I am going to take a tablespoon of ghee.
थोड़ा सा गर्म किया है मैंने घी को, एंड देन यू हैव टू ऐड द एक्टिवेटेड चारकोल इन इट, यू हैव टू जस्ट मिक्स इट. आफ्टर मिक्सिंग इट यू कैन स्टोर इट अप टू 3 months. एंड बेसिकली बहुत अच्छा काजल बना था. इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग ऑल्सो एंड डज नॉट स्मज. वो भी एक अच्छा रिजल्ट है उसका. एंड येस, दिस DIY वॉज गुड. So you will need a tablespoon of aloe vera gel, and then you have to add 2 to 3 tablespoons of gulab gel in it. And yes, your setting spray is ready. For small occasion you can use the setting spray. And yes, it's done. And yes, that's it for the video. All the products जो भी मैंने बनाए थे वो मैंने सारे मेरे फेस पे लगाया. सबसे बेस्ट अगर कोई चीज़ बनी है तो वो है काजल. एंड द सेकेंड थिंग वॉज BB क्रीम. एंड द थर्ड थिंग वॉज द सेटिंग स्प्रे. ये तीनों चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छी लगी है. अगर काजल बना रहे हो और आपके घर पे अगर एक्टिवेटेड चारकोल है तो प्लीज़ वो यूज़ कर देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है. मेरे नाखून देख लो, बहुत बट वो बहुत अच्छा लाइक सी है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तो लग रहा है. लाइक ओ शिट, अभी तक तो 1 hour हो गया. 1 hour तक तो वो अच्छी है. सी नाउ इट्स 3 o'clock. 3 o'clock को मैं वीडियो बना रही हूँ रात के. इसका रीज़न यही है कि घर पे शांति यही टाइम पे रहती है, नहीं तो नहीं रहती, इसकी वजह से. सो यस, इफ यू लाइक माय वीडियो गिव अ थम्स अप. अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो. And yes, I will be coming with next video next week. तब तक के लिए